ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। अमेरिका के वर्मोंट इलाके के रहने वाले एक किसान ने अपने फार्म ट्रैक्टर नाल पुलिस दीयां कई गड्डियां कुचल दित्तियां। हाल ही अपनी गिरफ्तारी तो नाखुश यह वर्मोंट वासी पुलिस से इन्ना ज्यादा खफा होया कि उसने पुलिस के 7 व्हीकल दरड़ दिते। वर्मोंट वासी की पछाण 34 साला रोजर वजों हुई है, जिस दे गुस्से कारण पुलिस दीयां 6 कारां ते एक वैन नुकसानी गई। इस वारदात तो बाद वह फरार दस्या जा रहा है। पुलिस का कहना कि मारे जवाना रखने के एवज में उसनू गिरफ्तार किया गया सी, जिस कारण वह काफ़ी ज़्यादा निराश महसूस कर रहा सी ते उसने पुलिस से गुस्सा कढ़ण लई यह हरकत की। ओकलाहोमा के स्लाटरविले इलाके के जंगलों च लगी अग कारण कई घर के सड़ जाने की खबर है। यह अग लगातार फैलती जा रही है, जिस कारण इस इलाके च मौजूद लोगों को सुरक्षित थावां ते भेजा जा रहा है। अग कारण जंगली इलाके च खड़े वड्डे वड्डे दरख्त भी सड़ के सुआह हो रहे हैं ते चारे पासे धुआं ही धुआं फैलिया हुआ है। 15 तो 25 माइल प्रति घंटा की रफ्तार नाल चल रही हवावां कारण इस इलाके च तापमान 110 डिग्री तक पहुंच गया है। फायर फाइटर्स मुताबिक घट्टो घट्ट 100 घरों के इस अग की लपेट में आने की संभावना बनी हुई है। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज के वकील ने कहा कि इक्वाडोर वालों दी जाने वाली कानूनी सियासी शरण बारे ब्रिटेन मना नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि जेकर इक्वाडोर वालों असांज नूं शरण देने की अपील मान ली जाती है तो इस विच अड़िक्का पाउण दा ब्रिटेन नूं कोई भी अधिकार नहीं होएगा। विकीलीक्स फाउंडर असांज के वकील बाल्टासर गारजोन ने कहा कि जेकर सियासी शरण बारे इक्वाडोर हामी भर दिंदा है तो जूलियन नूं अपना केस लड़न विच ज़्यादा सौख होएगी और उसनूं अमेरिका हवाले किए जाने की संभावना भी घट हो जाएगी। बाल्टासर ने कहा कि जूलियन सेहत और मानसिक पक्षों बिल्कुल ठीक है, पर वह फिलहाल औखे हालात विचों गुजर रहा है। ब्रिटेन के ज़्यादातर नौजवानों का मनना है कि जेकर रोजगार की स्थिति अजिही ही रही तो देश में 2011 वर्गे दंगे फिर तो हो सकते हैं। यह गल एक ताज़ा सर्वेखण में सामने आई है। ड्रग सप्लाई करने वाले माफिया ते गैंगस्टर मार्क डुगन नूं पुलिस अधिकारियों वालों मारे जाने तो बाद लंदन और बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर, सालफोर्ड, नॉटिंघम, ब्रिस्टल और लीड्स वर्गे शहरों च दंगे भड़क उठे सन। यह दंगे 5 दिन जारी रहे और इस दौरान कुल 5 लोग मारे गए तो 4000 तो ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हां दंगिਆਂ दौरान 20 करोड़ पाउंड का नुकसान होया सी। ताज़ा सर्वेखण च 12 तो 18 साल की उम्र के नौजवानों का मनना है कि इस बार गर्मी च फिर हिंसा भड़क सकती है। यूनाइटेड नेशनस असैंबली ने भारी बहुमत नाल सीरिया के खिलाफ पेश मते ते अपनी मुहर ला दी है। इस मते नूं सऊदी अरब ने पेश किया सी। इंडिया समेत 31 देशों ने वोटिंग प्रक्रिया च हिस्सा नहीं लिया, जदों कि 12 देशों ने मते के विरोध में वोट पाए। असद विरोधी मते के पक्ष में 133 वोट पाए गए। मते च बशर अल असद सरकार वालों सीरियाई जनता के खिलाफ जारी हिंसा की सख्त शब्दों च निंदा की गई। असैंबली ने असद सरकार को कहा कि वह अपने रासायनिक और जैविक हथियारों के ठिकाने तुरंत प्रभाव नाल बंद करन ते विरोध कर रहे जनता ते हमला करन तो बाज आउण। मते च सीरिया संकट नूं हल करन विच यूनाइटेड नेशनस की नाकामी ते नाराजगी ज़ाहिर की गई। The conflict in Syria is a test of everything this organization stands for. I do not want today's United Nations to fail that test. I want us all to show the people of Syria and the world that we have learned the lessons of Srebrenica. United international pressure can make a difference. The Syrian people need action. Their aspirations have been denied. Their suffering is profound, and increasing militarization promises only worse. The primary responsibility for stopping the violence rests with those on the ground, particularly the government. But their refusal to lay down arms does not absolve the rest of us of the need to act. Mr. President, we would also like to thank the chair of the Arab Group, the Ambassador of Saudi Arabia, for presenting today's resolution, which we fully endorse. It comes at a moment when the Security Council, due to 3 double vetoes, has not been able to live up to its responsibility and agree on measures to ensure compliance with its own decisions. Yes, Mr. President. While the Security Council remains paralyzed in New York, Assad's Council of Terror continues to operate ruthlessly in Damascus.
I think as the President of the Security Council, I think I am extremely pleased on one side that the General Assembly has given such a, as my British colleague was saying, such colossal majority to the resolution presented by the Arab League. On the other side, of course, I am very sad that the Security Council has been unable to act so far. But what is striking in this vote, first, of course, the figures. 133 on a strong text, because it is a strong text, and you'll notice the number of countries which voted against it, 12. It's always the same 12, actually, which voted against the previous resolution in the General Assembly. So I think it's obvious that there is a wide consensus in the international community behind the approach of saying to the government of Syria, you know, you have to cease the violence, the indiscriminate violence against the civilian, the violation of human rights, violation of the humanitarian law by when you shell civilian neighborhoods, and you have to enter into a political dialogue. The Security Council will be discussing Syria on a number of occasions in the course of August, but as you know, there are strong divisions in the Council about taking tough action against the Syrian regime. Kofi Annan, when he last briefed the Council, asked the Security Council to offer strong, united and concerted pressure behind his plan, and made clear that the pressure needed to come first on the Syrian regime to implement its commitments under that plan, and then on all other parties in Syria. Unfortunately, despite our best efforts, it wasn't possible to reach agreement in the Council on such strong support for Kofi Annan's plan. We will try again, but there will be a number of opportunities, as I mentioned, in the course of this month to discuss Syria in the Security Council. Well, I expect the Security Council to hear the message loud and clear. The message has been delivered to the Security Council by the world community at large, that the paralysis of the Security Council is unacceptable, the continued bloodshed in Syria is unacceptable, and that therefore the Security Council must move with unity. We think that this resolution, as well as the statements that were given by Mr. Kofi Annan, will give impetus to the efforts at the Security Council. You have heard my colleague, the representative of France, talking about possible steps by the Security Council in the near future, and we certainly hope that the message would be heard effectively in Moscow and Beijing. ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।